So very good evening class. Today is the class of MCQ class number 23 of the UGC-NET paper 2 Mass Communication and Journalism. Here we are going with the questions number 195 in today's class. That is, icons are group of interactive. Everybody, please read it the twice, right? दो बार आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको आंसर्स मोर कॉन्फिडेंट आएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट डिमांड्स. बी diminutive, C symbols, D definitions. Everybody. So options are in front of you that you have to answer the appropriate one. The icons are grouped of interactive what? Answer it fast. Yes. Everybody has answered. So let's check whether it is right or wrong. So icons are group of interactive symbols, right? Very good. All of you have answered correctly. So here the right answer it is that symbols. Okay. जो हमारे कंप्यूटर में आइकॉन्स होते हैं या फिर हम जहां भी आइकॉन्स देखते हैं दैट ऑल आर द ग्रुप्स ऑफ इंटरैक्टिव सिंबल्स. सो आइकॉन्स इज अ स्मॉल इमेज यूजुअली बाय अ सिंबल used to graphically represent a software program or file functions on a computer screen. Icons make it easier to recognize and locate items on the computer or feature within a program, right? So when you click on the, like for an example, in front of on my screen, there are a lot of the options are there, right? So that all the icons are available. Like for an example, this is a icon of the clear, right? Clear or the recycle bin, or you can say or delete, right? So this is like that we can understand, we can communicate through the symbols, right? We can communicate through the icons. Icons are very small images that usually we call it as a symbol, but it represent a software program or the file or the functions on a computer screen. Very easy to recognize and locate the items, right? Where the file is located on your computer, it definitely it helps with the icons, right? So ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना, ये आपके ग्राफिक डिजाइनिंग से क्वेश्चंस था. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 196. Alvin Toffler used the term. Yesterday we had discussed about the Alvin Toffler, right? They have coined the term थर्ड वेव, राइट? थर्ड वेव ने जो है वो एल्विन टॉफलर ही नहीं दिया था, तो जल्दी से बताएंगे इस ऑप्शंस में. एल्विन टॉफलर यूज द टर्म मैसिफिकेशन, डीमैसिफिकेशन, सिंथेटिक इमेजेस एंड डी क्लिनिकलाइजेशन. एवरीबॉडी, yesterday we had discussed. Yes, जल्दी से आंसर करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एल्विन टॉफलर यूज द टर्म. इट वाज आस्क्ड इन द 2015 के सितंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. पेपर 3 का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. एल्विन टॉफलर यूज द टर्म दैट इज डीमैसिफिकेशंस, राइट? सो डीमैसिफिकेशंस क्या होता है? एवरीबॉडी, हैव यू हर्ड अबाउट द डीमैसिफिकेशंस वर्ड? इट इज demassification. That is what the, here it is, idea of demassification refers to a state where a social system or a society that is becoming less uniform or the centralized, right? It is talking about decentralizations, right? Decentralize or the fragmentation or the divide. I'm writing all the synonyms so that you can understand it better, right? So this is what we can say that, or the classification. So we know that in the terms of the advertisement also, advertisement में भी हम जब हम product को बनाते हैं, when we promote the product, we choose the target audience, right? When we made the product, we choose the area, right? जब भी हम लोग product के लिए area, target audience, as well as different the price, place, promotions, 4P, 7Ps of marketing that you had read, right? In the terms of advertisement, what are the things that these are the small specifications or the fragmentations, right? ये आपने अलग अलग चीजों में डिवाइड किया है चीजों को, आपने एक अच्छी तरीके से आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो जाए, ब्रांड अवेयरनेस हो जाए. सेम चीजें यहाँ पर एल्विन टॉफलर ने डीमैसिफिकेशंस का मतलब बताया है. दैट इज डीमैसिफिकेशंस ऑफ द मीडिया, राइट? डीमैसिफिकेशंस ऑफ मीडिया, जो कि आज हम
इंटरनेट के एरा में या सोशल मीडिया के एरा में हम बहुत डीमैसिफिकेशंस देख रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, डीमैसिफिकेशन ऑफ द मीडिया मींस communication media that reach small, fragmented or the niche audience, right? niche audience तक आपको अगर पहुंचाना है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट या फिर कोई मैसेज आप बहुत दूर के इलाकों तक आप पहुंचाना चाहते हो, तो आपको अलग अलग हिस्से में आपको टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? So this is what it is an opposed to mass communication via mass media, right? Mass communication क्या है? It magic multiply, right? It multiply the masses simultaneously together and reach to the masses, right? ये आपका एक समय में बहुत लोगों तक इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आप मास कम्युनिकेशन का यूज करते हो. बट हेयर द डीमैसिफिकेशन इन टर्म इन द मास कम्युनिकेशन इट इज हेयर व्हाट दैट यू हैव फ्रेगमेंटेड द ऑडियंस, राइट? आपने ऑडियंस को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द वेब 2.0, अगर हम वेब 2.0 की बात करेंगे, सोशल मीडिया की बात करेंगे, वी हैव डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज इट्स ऑन टारगेट ऑडियंस, राइट? अगर इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम की अपनी टारगेट ऑडियंस है. लाइक मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी यूज द इंस्टाग्राम. अगर ट्विटर की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन यूज द ट्विटर्स, राइट? अगर हम फेसबुक की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द public the arm users, ठीक है, or the public users are on the Facebook, right? Our like friends, families, they are on the Facebook, right? So definitely like for an example, LinkedIn, the all the businessman peoples or the startups are on the LinkedIn, right? सारी चीजें जितने स्टार्टअप्स करने वाले बिजनेसमैन वाले और जितने स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स पर्पस है, ये सारी चीजें क्या है, लिंक्डइन से जुड़े हुए हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट द स्मॉल स्मॉल टारगेट ऑडियंसेस आर देयर. अलग अलग niche audience है. So this is what we can see in the web 2.0. It is that on the it has been demassified and democratized further by the converging the multimedia elements with the user generated content technology such as blogs, right? Vlogs, picture sharing, video sharing, instant messaging, web forum, virtual game, wall posting, crowdsourcing. ये सारी चीजें आपका अलग अलग क्या है in a single website that we see. So this is what here that talking about the demassification by the Alvin Toffler, right? अब आपको क्लियर हुआ डीमैसिफिकेशन क्या है? दैट इज डिसेंट्रलाइज. द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? द ऑडियंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑडियंस शुड बी फ्रैगमेंटेड, ओके, ऑडियंस शुड बी निश, राइट? इट इज क्लियर डीमैसिफिकेशन. एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? सो ऑलवेज रिमेंबर डीमैसिफिकेशन ऑफ द मीडिया, राइट? Demassifications of the media as well as third wave, the both the concept given by the Alvin Toffler. Okay, it is all clear. चलिए, वेरी गुड. जल्दी से बताएंगे फ्यूचर शॉक किसने लिखा है? एवरीबॉडी, फ्यूचर शॉक रिटन बाय द ऑथर. एवरीबॉडी, Future Shock, very important book that written by, yes, Alvin Toffler, right? So also the third wave, right? The third wave, it is also written by the author Alvin Toffler. Okay, clear है? 197. Question number 197. It is from the advertisements. So जल्दी से बताएंगे. The audience evaluations of alternative creative strategies is labeled as. Please read it twice, you will get the answer. The audience evaluations, it is the evaluations from the audience feedback, right? It is talking evaluations means audience evaluations means it's feedback, right? So audience evaluation of alternative creative strategies is labeled as what? So options are first concept testing, right? Concept testing, B audience test, C option matrix, D concurrent test. Everybody answer it. The audience evaluations of alternative creative strategy is labeled as. Very important question and conceptual based questions here it is, right? Okay, so right answer here it is, that is A. A जो है आपका
राइट आंसर है, वेरी गुड। रचना एंड अभिलाषा हैज आंसर्ड, इट्स करेक्ट। ओके, so this is what that concept testing क्यों होगा आंसर्स, because what is concept testing? Basically that concept testing is a process of getting an idea evaluated by your target audience, right? It is a process of getting an idea evaluated by your target audience before it comes available to the public, right? कोई भी product, if any product launch in the market, before launching any product in the market, we first test, right? हम test करते हैं, right? Whether our concept behind this product it is appropriate or successful or not, that we test from the audience, right? So this is what we evaluate the audience performance or the audience reactions. We take the audience reactions, we this is the kind of the survey, right? Concept testing is the kind of the survey. This is what that we get an idea evaluated by the target audience before it comes available to the public. So it includes anything from the product concepts to the ad campaigns, right? So concept testing help you steer clear of the bad decisions making, especially if you are updating your product or the pricing. जब भी आप प्रोडक्ट को कुछ नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, या उसकी प्राइस में आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट को आप किसी भी तरीके से आप अपडेट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू सी दैट the audience what the reactions about the prices of the product, what the reactions about the new updations in the product, right? So what you will taste, you will taste the audience, right? So audience, what the audience reaction it is, what the audience evaluations it is, right? So this is what the audience evaluation of the alternative creative strategies behind your product, that can be labeled as the concept testing, right? So concept testing जो है आपका कुल मिलाकर यही है कि आपका किसी भी मार्केट में अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले क्या है आइडिया आपका सक्सेसफुल रहा या नहीं, कितनी तरीके से आइडिया को ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है, whether it is bad decision or the good decision, that it is tested by the audience, right? So ऑडियंस के रिएक्शन होने के बाद ही पता चलता है कि क्या हमने गलत किया है और क्या सही किया है, राइट? सो दैट इट इज यूज्ड वेरी मच बिफोर द एड कैंपेन लॉन्च करने से पहले हम इज लाइक द पायलट स्टडी, राइट? एक तरीके से क्या है ये पायलट स्टडी है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग मींस पायलट स्टडी, राइट? क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, इट इज ऑल क्लियर? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट 198, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन इज ट्रांजिशन कैन बी described as changing one shot from the another. B, in a news, cut is the most commonly used method of transition. C, in camera edit means recording your shot in the order in which it is present. D, a dissolve can be made between two shots during in the camera edit. जल्दी से आंसर करेंगे, very important, which one of the following statement is incorrect? A option talks about transitions, B option cut about cut, C option cut about camera edit, and D option cut about talk about dissolve. So here the right option it is D, absolutely D is the right one, right? Because dissolve is not the camera edit, right? Dissolve camera edit में नहीं होता है, dissolve is in the post productions, right? एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में और द फिल्म एडिटिंग, right? It is a part of the post productions. That a dissolve is a transition. Basically it is a type of film transitions in which one sequence fades over the another, right? One sequence fades over the another, it is called dissolve transitions in the post productions or in the video editing. So it is the wrong one, ये गलत है, ठीक है? ये आपका आएगा इन वीडियो एडिट, राइट? बाकी सारे ऑप्शंस सही है, राइट? सो ये आपका क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन कौन से सही होगा, जल्दी से बताएंगे, एवरीबॉडी आंसर इट। विच ऑफ द, यस, ए बी सी, it means transitions, right? So transition is described here the changing one shot from the another. Here it is given the definition of the transitions.
ट्रांजिशन को समझना है तो इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। ट्रांजिशन वो होता है जो एक शॉट से दूसरे शॉट में एक चेंजिंग होता है, राइट, द चेंजिंग वन शॉट फ्रॉम द अनदर, दैट इट इज अप्लाइड ऑन द कट साइड, राइट। यहां भी एक वीडियो है, वीडियो 1, वीडियो 2, राइट, यू अप्लाइड द ट्रांजिशंस बिटवीन द वीडियो, राइट। सो वेयर इट इज द कट जहां पे आप उसी पे आप अप्लाई करते हो ट्रांजिशंस, बेसिकली दैट ट्रांजिशंस आपको दो वीडियोस को कनेक्ट करने का काम करता है, ओके। न्यूज में कट जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। ट्रांजिशंस की बात करेंगे तो कैमरा एडिट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम वो शॉट्स लेंगे जो हमें सीक्वेंस वाइज, हम ऑर्डर्स में वाइज हम जो रखते हैं, दैट इज व्हाट द शॉट्स वी टेक, राइट। अर्लियर एनालॉग एडिटिंग की जब बात करते हैं, राइट, तो कैमरा एडिट की बात करते हैं, राइट। एनालॉग एडिट सबसे पहले हम वही कैप्चर करते थे कैमरे के अंदर जो हमें सबसे पहले रखना है। उसके बाद सेकेंड वीडियो दैट वी कैप्चर, दैट आफ्टर इट विल बी राइट इन अ सीक्वेंस, सेकेंड पोजिशंस में आपका जो आएगा वो हम कैमरा एडिट में रखते थे। इस तरीके से हमारा कैमरा एडिट होता था, राइट। सो इन इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सो ए बी सी इज योर करेक्ट, राइट। अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया तो डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, एवरीबॉडी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन मिथ्स आर। अगर कम्युनिकेशन के व्यू पॉइंट से बात करेंगे तो मिथ्स क्या है? अननेचुरल, बी स्टैटिक, सी डायनेमिक, डी नॉन कंट्रोवर्शियल। एवरीबॉडी आंसर। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन मिथ्स आर, राइट, वेरी गुड, एवरीबॉडी हैज आंसर्ड। सो यस, अगर कम्युनिकेशन के व्यू पॉइंट से बात करेंगे तो मिथ्स जो है वो क्या है? वो डायनेमिक है। मिथ्स आर डायनेमिक, ओके। हाउ myths are dynamic? So myth in the media, right, media is the communications, right? So myth in the media analysis refers to how words and images are systematically used to communicate, right, culture and political meaning। ठीक है, किस तरीके से वर्ड्स और इमेज जो है हमारा सिस्टमेटिकली हमें कम्युनिकेट करता है। आइदर वी टेक एन एग्जांपल फॉर द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, राइट, cultural understanding or the political understanding or the political meaning, right? So this is what that how words and images are systematically used to communicate culture and political meaning. So in takes such as, like for an example, advertisement, magazine, film, TV programs, the different things are here, different areas are there, right? Either cultural or the political or the environmental, or in the terms of advertisement, magazine, film, TV program, different medias are here. So communications, in the communications area or the viewpoint of the communication, myths are always dynamic, right? It keeps on changing, right? It keeps on changing। politically अगर बात करेंगे तो उसका अलग मतलब है, अगर environmentally बात करेंगे उसका अलग मतलब है, सोशली बात करेंगे उसका अलग मतलब है, कल्चरली बात करेंगे उसका अलग मतलब है, राइट। सो different मीनिंग फ्रॉम द different पर्सपेक्टिव्स, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशंस, myths आर ऑलवेज डायनेमिक, ओके। क्लियर है एवरीबॉडी? और आज मॉडर्न मीडिया कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें तो सबसे ज्यादा हमारा अगर मिथ्स जो है वो डायनेमिक देखा जाता है, राइट। सो नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 200, राइट। We have raised to the questions number 200 finally. So question number 200, it is that the Vernacular Press Act of the 1878 was scrapped after being in the force for। scrapped का मतलब repealed, खत्म कर देना, अंत हो जाना, राइट, समाप्त। So the Vernacular Press Act of the 1870 was scrapped after being the force for 20 years, 10 years, 5 years, 3 years. Everybody answer it, right? Yes. Abhilasha has answered. Yes. Please answer. It is very important questions number 200, right? It is about the Vernacular Press Act। और किन्होंने लेकर आया था? जल्दी से बताएंगे आंसर, पहले बताइए। Vernacular Press was enacted by the, who enacted the Vernacular Press Act? Lytton। Yes, very good। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, राइट, 1878 में। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द ब्रिटिश, राइट। ब्रिटिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था और हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लॉ था, राइट, बिकॉज इट कर्टल द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, राइट। जो भी इंडियन लैंग्वेज प्रेस थी
यानी नॉन वर्नाकुलर प्रेस दोज विच न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट। जो नॉन इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश में पब्लिश नहीं होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज व्हाट अबाउट वर्नाकुलर। ओके, सो दैट इज व्हाट अबाउट the Vernacular Press Act was enacted in the 1878 by the Lord Lytton to curtail the freedom of the Indian language press that was proposed by the Lord Lytton, then Viceroy of India. Act was basically intended to prevent the vernacular press from the existing criticism of the British policies, right? जो हमारे इंडियन फाइटर्स या इंडियन लोग थे, पत्रकार थे, वो क्या करते थे, ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ हमारे अखबारों के अंदर लिखते थे, राइट। सो बेसिकली उस चीज को हटाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर लाया गया था, राइट। बिकॉज हिंदी ही एक हिंदी और या फिर रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम कम्युनिकेट कर पाते थे इजिली, राइट। बिकॉज ब्रिटिशर समझ ना पाए और हम अच्छे से इसको हम कम्युनिकेट कर पाए, जागृत कर पाए अपने देश की आजादी के लिए। सो बेसिकली दे वेर मोर एक्टिव टुवर्ड्स द रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, राइट। सो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गए 1878 में, और जो भी अखबार नॉन इंग्लिश होते थे यानी जो रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में छपता था उसको बंद कर दिया गया, समाप्त करने का घोषणा कर दी गई इस एक्ट के अधिनियम से, राइट। दिस इज व्हाट दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ द 1878, राइट। सो इट वाज स्क्रैप्ड आफ्टर बीइंग द इन फोर्स ऑफ द 3 years, सिर्फ 3 years के लिए चला, इट वाज रिपील्ड, राइट। इट वाज रिपील्ड बाय द everybody. This act was repealed by the Lord Ripon, okay, in the year 1881. Yes, enacted by the Lord Lytton in the 1878 and repealed by the Lord Ripon in the 1881. Okay. Next question, question number 201. The originator of the limited effects theory of the mass media is. It is about limited effects theory. The originator of the limited effects theory of the mass media is Everett M. Rogers, Paul Lazarsfeld, Harold Ennis, Harold Laswell. Yes. Those who have answered correctly, please उसको find out कीजिए। Harold Ennis का हमने पढ़ा था। What we have read about the Harold Ennis? We have discussed when we were reading the chapterizations, जब हम लोग chapters को पढ़ रहे थे उस समय हमने Harold Ennis को लेकर बात भी की थी। What about the Harold Ennis? Known for everybody. Harold Ennis के बारे में बताएंगे जल्दी से। So meanwhile we can discuss about the originators, Paul Lazarsfeld, right? So limited effect theory was proposed by the Austrian American sociologist Paul Lazarsfeld. It is a mass communication theory which argues that the influence from a mass media masses on the individuals, it is limited, right? मास मीडिया का अगर बात करेंगे, मास मीडिया मैसेज का अगर इम्पैक्ट जो है, इन्फ्लुएंस जो है, वो क्या है, लिमिटेड है, राइट। इट इज लिमिटेड। सो इट वाज डेवलप्ड इन द लेट 1940s बाय द सोशियोलॉजिस्ट रिसर्चिंग अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड द मीडिया इफेक्ट्स, राइट। सो दिस इज व्हाट द इफेक्ट थ्योरी, ये मीडिया इफेक्ट्स, मीडिया का इफेक्ट कितना पड़ता है, राइट। व्हाट द इफेक्ट्स ऑफ द मीडिया, इट इज हाउ मच मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल्स, this was all about. So it was, he argues that media effect on the audience or the individuals, it is very much limited, right. It was developed in the 1940s by the sociologist Paul Lazarsfeld, right. It is all clear. चलिए हैरोल्ड इनिस के बारे में बताइए। रचना, हैरोल्ड इनिस के बारे में बताइए, हमने इसको लेकर पढ़ा चुका है। हैरोल्ड इनिस, given the concept and popularly known for, have you remembered? चलिए बताइए, जल्दी से बताएंगे। एवर्ट एम हैरोल्ड इनिस के बारे में बताइए तब तक। एवर्ट एवं रोजर्स, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। यस, कम्युनिकेशन थ्योरी दिया, कौन सा थ्योरी है, राइट। हैरोल्ड इनिस ने कौन सा थ्योरी दिया है वो आपको बताना है, राइट। पॉल लेजर्सफेल्ड, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। हैरोल्ड लैसवेल, लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी टॉक अबाउट। हैरोल्ड इनिस को लेकर आप बताएंगे, दिस इज व्हाट यू विल चैट और इन द कमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं ये करा चुका हूं इसलिए मैं आपको, ये आपका टास्क है, जल्दी से फाइंड आउट कीजिएगा और बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202, द हर्मेनेटिक
theory aims at, yes, very good Samrin, answer it, very good. That is what the bias of the communication, right? Bias of the communication जो है वो हैरोल्ड एनिश ने दिया है, राइट? सॉरी, एनिश ने, ओके, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें जो हम बात कर रहे थे, इट वाज very much important, right? We were discussing it here, the bias of the communication, it is, right? Very much important. Hermeneutic theory जल्दी से बताएंगे. Hermeneutic theory aims at systematic of text. Very important. This is the one kind of another important theory. It is about hermeneutic theory. Have you heard the name of the hermeneutic theory? Everybody जल्दी से बताएंगे कभी इस theory का आपने नाम सुना है? It is very important theory and it talks about what its systematic text or rejection, acceptance, interpretations, deep predications. Everybody. The hermeneutic theory aims at systematic of text. Very important. जल्दी से आंसर करेंगे. Timer is going to be end. Yes, that's the right answer. Samreen has answered. That is C. C जो है आपका क्या है? Right answer है. Okay. Yes. Very good. That is about the interpretations. So आपका hermeneutic theory जो है, ये basically deals with the process of interpretations, right? Process of interpretations. याद रखना है आपको. Okay. Hermeneutic theory deals with the process of interpretations. Hermeneutic investigates the process of interpretation, the communication of meaning through the text, right? Communication of meaning through a text and linguistic competence in a conversation. It focuses on identifying the socio-cultural and the linguistic elements that influences on the process of interpretations, right? Interpretations को लेकर ज्यादातर ये focus है ये theories, okay? Because it investigate the process of interpretations. कैसे interpretation शुरू हुआ उस इसको लेकर. For an example, right? अगर कोई आपका एक poem है, right? If there is an poem, right? So how poem interact, how poem interprets towards the audience, ये ऑडियंस के साथ कैसे इंटरप्रेट करता है वो आपको समझना है. दैट द होल प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशंस, दैट इज हाउ द पोएम इंटरैक्ट्स विद द ऑडियंस. लाइक फॉर एन एग्जांपल, यू विल फर्स्ट इन्वेस्टिगेट दैट हु रोट द राइम. ठीक है, ये राइम किसने बनाया, किसने लिखा. ठीक है, व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ राइटिंग जब लिखने के समय में उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, राइट? What were the circumstances or the situation at the time of writing all these rhymes, okay? What meaning did the author want to convey, right? Author क्या convey करना चाहता है इस मैसेज, इस rhyme के थ्रू क्या मैसेज convey करना चाहता है, that is also here, right? Do the words have the same meaning to him for us? क्या वही मतलब है जो हमें समझाना चाहता है, जो लोगों को समझाना चाहता है? Do the words have the same meaning, right? तो what did the rhyme mean for those who first heard it, right? जो पहली बार राइम को सुनेगा उसका क्या रिएक्शन रहेगा? What did the rhyme mean? क्या राइम समझाना चाह रहा है पहले ऑडियंस के लिए और जो बार बार पढ़ेगा उसके लिए, राइट? What does the rhyme mean to us, right? हमें इस राइम को पढ़कर क्या समझ में आया, क्या चीज से रिएक्ट हुई, कैसा रिएक्शन आया? Whole process of interpretations, it is about the hermeneutic theory, right? Hermeneutic theory basically deals with the whole process of interpretations of the text, right? Or generally it is used in the language. हम language में इसको ज्यादातर पढ़ते हैं in the language communication or the linguistic, that we read the hermeneutic theory basically, right? So always remember their aims at systematic of the text interpretations, right? Clear है सभी को? जल्दी से बताएंगे. It is all clear, very important. Yes, very good. So next it is now question number 203. Question number 23, and it is the last questions. What should be the level of the sound of a professional audio recording? ठीक है,
प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग के साउंड का लेवल क्या होना चाहिए? Between 30 and 40 decibel, between 40 and 50 decibel, between 50 and 60 decibel, between D, that is between 60 and 70 decibel. Everybody. Yes. Answer it first. Those who have not answered, please answer. Yes. Very good. So right answer it is, that is D. D आपका right answer है. 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 डेसिबल के बीच में आपका क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो साउंड है, दैट शुड बी द लेवल, राइट? लेवल between 60 and 70 dB of the sound of a professional audio recording should be, right? So decibel is the measurement unit. We know that is represented by the dB, right? So decibel is the measurement unit used for the intensity of a sound the human ears as a dynamic range from 0 dB to the 120 to the 130 dB. ठीक है, एक ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी जो है कहां तक सुन सकता है? 120 से लेकर 130 dB तक हम लोग सुन सकते हैं, राइट? बट द प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग साउंड जो है वो लेवल उसका क्या होना चाहिए? 60 से 70 डेसिबल होना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट वी हैड डिस्कस्ड. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द समराइजेशन. अगर हम अब समराइजेशन की बात करेंगे, एवरीबॉडी नाउ जस्ट हेल्प मी टू समराइज. क्या हमने सीखा? व्हाट वी हैव लर्नड, एवरीबॉडी? फर्स्ट, यस, hermeneutic theory, that is talk about the interpretations, right? Yes. Icons के बारे में हमने जाना, that icons, yes, very good, that is generally the represented by the symbols. Very good. Toffler, Alvin Toffler को हमने पढ़ा. Alvin Toffler about, yes, what was the term given by the Alvin Toffler? Third wave and everybody, third wave, future shock, and what we had discussed today, demasifications, right? Demasification of media. Okay, next what we had discussed, concept testing, right? It is basically that type of testing before any product will launch into the public, right? That is what the concept testing, the evaluations from the audience, right? Yes. Also, we have discussed the Harold Ennis, the bias of the communications, right? Harold Ennis को हमने देखा, bias of the communications. Yes, we have also discussed that myths are always dynamic. Myths are dynamic. Okay. We have also discussed that Vernacular Press Act about, okay, Vernacular Press Act. Yes, a term for the 3 years, 3 years term था, और लॉर्ड लिटन ने इसको लेकर आया. लॉर्ड लिटन इनैक्टेड एंड लॉर्ड रेपन, और 1878 में आया. ओके, और रिपील्ड हुआ कब? 1881 में. ओके, नेक्स्ट लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी को लेकर हमने डिस्कस किया. लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी दैट पॉल लेजर्सफील्ड. ओके, यस, वेरी गुड. In the 1940s, sociologist, right? Sociologist Paul Legersfield that we had discussed, right? Yes. Bias of the communication हमने discuss कर लिया. Harold Ennis ने. Hermeneutic theory talks about the interpretations. Yes. Next, it is that sound of the professional recording, right? कितना होता है? जल्दी से बताएंगे. What the level of the sound? Sound of the professional audio recording it is. कितना होता है? How much it is? Yes, between 60 to 70 dB. Okay, yes, very good. So this is that what we have learned in the today's class. It is very much important. Please आप अपने क्विक रिविजन्स या अपने नोट्स में इसको आप सभी चीज को शामिल कर लीजिए.
It will be help, it will help you for the last minute revisions. Okay, last minute revision के लिए सारे काम आने वाले हैं, ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट. सो आई थिंक यू हैव लाइक्ड or enjoyed the classes. So thank you to everybody. Thank you so much. Okay, yes. Okay. So we'll meet tomorrow.